So I was looking for some photo respiration phenomenon about the Rubisco role. So I thought Kelvin cycle a little bit we have discussed that there is a starch formation, but there was a question remaining कि how the starch is going to move, है ना? तो उसके लिए मैंने थोड़ी सी रिसर्च करी थी and that I can tell you, but आज material बड़ा scattered है. Let me see कि how am I successful. So so we'll discuss about the C4 plant, C5 plant, C5 नहीं C4, C3 and CAM, है ना? तो there is a strange behavior. हाँ, this was the slide. Yes, this was the slide. Very good slide. So you can see what happens after the Kelvin cycle. है ना? In the chloroplast, we have discussed that there is a sucrose formation, right? Okay, so this is well known fact. But what happens after that? I have asked a question that we don't know how the sucrose is going to move in the different parts. Okay. गला फंस रहा है आज, रुक जाओ. मेरी दवा मिल गई ना. सॉरी. अभी मौसम भी चेंज हो रहे हैं तो sucrose. Now you see the facts. Starch is synthesized in the chloroplast, okay? And if you'll see how it's a very strange what mobilizes, है ना, movement of triose phosphate, because triose phosphate is exactly used to synthesize the starch, okay? So this is exactly the pH value decide where starch will be synthesized or not. So for the synthesis, it's mandatory. Sorry, it's a mandatory condition that triose phosphate should be retained. So if pI is low, all right, if pI is low, then triose phosphate is retained in the chloroplast and used to synthesize starch. If when pI is high, triose phosphate is exported in exchange for pI and used to synthesize sucrose, right? So this is the very good condition. How this plant is going to maintain. Okay, so chloroplast you can see, then diagrams showing the cytosol, and cytosol, what you can see is sucrose formation, right? So basic infrastructure for the sucrose is triose phosphate. So you can see pi translocator is there, right? So pi is released. When pi is released, when there is a ATP breakdown is there, right? ATP going to break down there, and then ADP glucose, because glucose ultimately going to synthesize by the Kelvin cycle, so triose phosphate is there, and then fructose 6-phosphate, then fructose 1,6-bis-phosphate, fructose 6-phosphate, glucose 6-phosphate, and then glucose 1-phosphate, and then ATP ultimately releasing pi. And this ADP glucose, with the help of starch synthase, going to synthesize the starch. Otherwise, in the starch form, they are not going to move. They will remain in the leaves. Okay, I'm getting my point. So, then triose phosphate is moving, right? And because of low pH, because pi translocator is there, and from the cytosol, pi is moving inside, so making here low pi, right? So that's why the movement is there. Triose phosphate, and then again with the help of aldolase, fructose 1,6-bis-phosphate, fructose 6-phosphate, and then hexose phosphate isomerase, glucose 6-phosphate, glucose 1-phosphate, UDP glucose, very similar to the glycogen, and UDP glucose phosphorylase is there. Sucrose phosphate, and then
sucrose formation is there. So ultimately, what is the carry out things? Carry out things is that cytosolic PI affect triose phosphate export from the chloroplast. When PI is high, triose phosphate is exported in exchange for PI. क्योंकि साइटोसोलिक PI की बात कर रहे हैं, अगर ये ज़्यादा हुआ तभी वो ट्राइज फॉस्फेट बाहर आएगा. अगर साइटोसोलिक PI कम हुआ then it retain in chloroplast and used to synthesize starch. ठीक है ना. तो that is the main things of the movement. एक तो स्टोरी उस दिन का क्वेश्चन रह गया था, शायद होमवर्क भी बोला होगा कि सर्च करना. तो ये था इसका रहस्य. ठीक है ना. इसमें कोई डाउट तो नहीं है? यू वांट एनी डिस्कशन हियर? अपोजिट है, ध्यान देना, है ना. PI का आपको देखना है कि PI के कंसंट्रेशन हाई किधर है और लो किधर है. मूवमेंट हमेशा साइटोसोलिक साइट से जा रहा है. कहाँ पे? क्लोरोप्लास्ट के अंदर. क्लोरोप्लास्ट में आपको लीव दिखाया था. क्लोरोप्लास्ट ऑलवेज है स्टार्च इज सिंथेसाइज्ड इन द क्लोरोप्लास्ट. ओके. अब क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पार्ट में मूवमेंट करना है तो दे कैनॉट मूव इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च, राइट. सो द साइकिल इज गोइंग ऑन. Beside the Kelvin cycle, there is another cycle is going on. Okay, Kelvin cycle तो चल ही रही है. Kelvin cycle में आप देखोगे कि continuous this form is going on. But ये triose phosphate जैसे बना वो बाहर आ गया, right? Triose phosphate बाहर आया in exchange with the PI. This is the pyrophosphate. PI is the pyrophosphate. Okay, and translocator is there. Amazing thing is there, presence of translocator. So they can ask, CSIR can ask question here कि अगर आपने एक्सपेरिमेंट करके एक स्टूडेंट ने PI ट्रांसलोकेटर को क्लोज कर दिया तो देन क्या आपका होगा कि नहीं, है ना. देन आपका सुक्रोज सिंथेसिस होगा. तो आंसर विल बी नो, क्योंकि ट्रांसलोकेटर ही तो है जिससे दोनों ट्रांसपोर्ट हो रहा है. बोथ द थिंग्स आर बीइंग ट्रांसपोर्टेड. हाँ, ट्राइज फॉस्फेट एज वेल एज सुक्रोज. ठीक है ना. दोनों जा रहे हैं, दोनों के लिए एक ही रास्ता है, राइट. तो दैट्स वाई ये मूवमेंट पॉसिबल है बिकॉज ऑफ ट्रांसलोकेटर. अल्टीमेट सेंट्रल में ट्रांसलोकेटर है. एंड सेकेंड थिंग है कंसंट्रेशन ऑफ PI. ठीक है. तो अगर PI ज़्यादा है यहाँ से तभी मूव करेगा, राइट. और क्योंकि अगर यहाँ पे ज़्यादा होता तो नीचे की तरफ आता. तो यहाँ पे ज़्यादा है तो यू आर गोइंग इनसाइड. और यहाँ पे हाई है, यहाँ पे PI ज़्यादा बन रहा है क्योंकि ये ग्लूकोज 1 फॉस्फेट जैसे है ना. अभी देखो ग्लूकोज 1 फॉस्फेट है. तो नाउ दे आर रिलीजिंग PI, PPI, देन PI. अब सुक्रोज फॉस्फेट बना तब भी PI रिलीज हो रहा है. मतलब एवरी एक्शन इज गोइंग टू, जैसे ट्राइज फॉस्फेट आया तो विद द हेल्प ऑफ एल्डोलेज फ्रक्टोज 1,6 बाई फॉस्फेट. तो यहाँ भी एक फॉस्फेट रिलीज हो गया. तो फॉस्फेट की ज़्यादातर हो गया, यहाँ पे ज़्यादा हो गया, बहुत ज़्यादा हो गया, राइट. This is the ultimate chemistry of the sucrose and starch. ये बहुत इंपॉर्टेंट स्लाइड है. एक ही स्लाइड में बहुत कुछ है ना. Everything is there. So the first thing is what is the main conclusion you can draw? Main